Namaskar. On behalf of Independent Research Ethics Society, we would like to welcome you all in AYUSH Samriddhi, which has just touched 1408th milestone due to your mentorship, cooperation, guidance, and participation. Thank you, and again thanks. We are really grateful to you all. 1408 is not a minor number, but we have touched this figure due to your cooperation only. मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं. Good Deed Day. I am really very much grateful to Western countries that beyond regional limits, they have created so many days that they have given us opportunity to relate everything with Ayush and conduct a webinar to communicate the society, new messages, new topics, and new interesting experts. So thank you again very much. Today in Good Deed Day, I would like to welcome Priyanka Sharma ji. I would like to welcome our beloved Saikat Kumar Basu ji, Suparna Sanyal ji. Saikat Basu ji has really kind enough to take the responsibility of tomorrow's Poila Vaisakh Grand Celebration. Thank you, Dr. Saikat. Thank you again. And Dr. Kamlesh Mahajan ji. Welcome, Dr. Kamlesh ji. I will add your photo on YouTube. And please circulate our YouTube links to maximum person in your circle to communicate the message, what exercise we are doing here for 3 hours daily from 3 years, 3.5 years. That must be communicated to the maximum persons, interested person definitely. And it is for the society. Tadiyam vastu govindam tubhyamev samarpite. So this is your expertise, and you can circulate it to your expert friends. Thank you very much. I would like to request Professor V.K. Agnihotri sir for his welcome blessings and then stage coordination. Welcome. Thank you, Professor Pawan Sharma ji. As you narrated already that you have already welcomed all the guest speakers of this webinar. Good deed, really a very important topic. And when I feel it that it starts right from the Vedas Yug or to the any religion or any good platform, right from Satyam Vad Dharmam Char to Dukkham Iksham Dukkham, means हम क्षमा भी मांगते हैं, हम अच्छे काम भी करते हैं, हम परोपकारी होते हैं, दूसरे के लिए भला करने के प्रयास करते हैं, हम हिंसा न करें, मनसा वाचा कर्मणा ऐसे लेके चलते हैं. और कितना इसमें एग्जीक्यूट हो पाता है, कितना कर पाते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है. केवल साहित्यिक रूप से सुनना, पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना अलग चीज है. तो इन्हीं सब कुछ शब्दों के साथ में हम अपने गेस्ट स्पीकर से आज बहुत कुछ सुनने जा रहे हैं कि क्या वेद और क्या हमारा अथर्ववेद और फिर क्या आयुर्वेद और क्या कंटेम्प्रेरी दूसरे सोर्सेज ऑफ नॉलेज हमें नोबल डीड्स या गुड डीड्स के बारे में बतलाते हैं. और ऐसा एक ही दिन बनाने की बात तो बहुत छोटी सी लगती है, ये तो प्रतिदिन प्रतिफल है. हमारी एक एक सांस अच्छाई के लिए हो तो ज्यादा दूर तक जाएगा, मनोबल हमारा बढ़ेगा, संदेश अच्छा जाएगा. इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः एक बार आप सबका अभिनंदन करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए प्रोफेसर पावन शर्मा जी को निवेदन करते हैं. नमस्कार. बहुत बहुत आभार सर. मैं अब अपने प्रथम वक्ता प्रियंका शर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ. प्रियंका जी, welcome. Great. Welcome. After a long time, please do join every day. Thank you, sir. Thank you, Pawan sir. Thank you, अग्निहोत्री sir. आप सभी को सादर प्रणाम और चरण स्पर्श. आवाज थोड़ी खराब है, थोड़ी तबीयत खराब है, और ये गुड डीड्स एक ही दिन को मनाते हैं. हम तो हमेशा मनाते हैं, उसे रसायन के फॉर्म में बताते हैं, सदवृत बताते हैं. तो बहुत छोटे में ही मेरा ये शायद सेकंड प्रेजेंटेशन सेम टॉपिक पे, सेम प्लेटफॉर्म पे है. तो पहले तो आप लोग का ही गुड डीड है कि आप 3 साल से लगातार 3 घंटे की एक्सरसाइज कर रहे हैं, पूरे आयुर्वेद का उत्थान कर रहे हैं. उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई. तो जैसा कि टॉपिक है गुड डीड, आयुर्वेद में वर्णन है सद और वृत. वो सभी आचार और विचार जो गुड है, सद है, सत्व गुण को बढ़ाने वाले हैं. इन ऑल सत्व गुण को उसे सदवृत कहा गया है. You can go for full screen from mobile also, it can be done. Yeah, sorry.
संहिताओं में सद्वृत्त का वर्णन सदाचार, धारणी वेग, आचार, रसायन और अष्टांग में दशविध पाप कर्म के रूप में किया गया है। सद्वृत्त मतलब वह सभी आहार, विहार, आचार जो सत्व गुण को बढ़ा रहे हैं, दोषों का शमन कर रहे हैं, साम्य अवस्था में बनाए रख रहे हैं, उन सभी को सद्वृत्त में बताया गया है। अगर बड़े बार से देखा जाए तो ये आहार संबंधी भी है, पर्सनल भी है, सोशल भी है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी हैं। कुछ बहुत सिंपल सी चीजें बताई गई हैं जो लोगों को लगती हैं कि सद्वृत्त में है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हाथ पैर धो के आहार का सेवन करना, साफ कपड़े पहनना, पहले अग्नि में अन्न का हवन करना, एक्सेट्रा। इन सभी से क्या होता है कि जीआईटी बहुत अच्छा वर्क करती है, इन्फेक्शन से बचे रहते हैं हम। और जो भी कोविड के टाइम में हमने देखा वो सभी इसमें है, आहार संबंधी, विहार संबंधी। रात्रि में दही नहीं खाना अयोग्य है, अपवित्र स्थान पे भोजन नहीं करना, ये सभी इसलिए कि अग्नि बनी रहे और दोष साम्य अवस्था में रहे। पर्सनल सर्जरी का शरीर संबंधी बताया गया है कि दिन में 2 बार प्रातः और सायं स्नान करना चाहिए। जितने भी मलायतन है, मतलब एक्सटर्नल ओरिफाइस जहाँ पे जर्म सबसे पहले आ सकते हैं, उनको प्रॉपर साफ करते रहना चाहिए। दोनों पैरों को साफ करना चाहिए, 15-15 दिनों पे बालों को साफ करना चाहिए। ये लगता है कि गुड डीड्स नहीं हो सकते, पर इतने बेसिक में आयुर्वेद में बताया गया है कि आपके इन्फेक्शन ना हो, और इसके लिए जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं वो सब सद्वृत्त में। इसके बाद उन्होंने और चीज बताई है जो कि मेंटल में सत्व गुण को बढ़ाने के लिए बताया है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बताया है, जिंदगी में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो कर्म बताए गए हैं उसमें 10 पाप कर्म है कि इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोभ, मोह, भय, शोक, क्रोध, अहंकार, निर्लज्जा, ईर्ष्या, अतिराग और दूसरे के धन लेने की इच्छा, वाणी से अत्यंत कठोर वचन, चुगलखोरी, झूठ बोलना, काल बिना। और इसमें आज के टाइम में हम फोन का ज्यादा यूज करना, सोशल प्लेटफॉर्म का अवेयरली यूज करना, बिना मतलब के इंस्टा फेसबुक पे डालना, ये सभी सद्वृत्त में आ जाते हैं। सामाजिक और आध्यात्मिक में आ जाता है कि हम अपने स्पिरिचुअल स्वयं के लिए क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नास्तिकों के संग नहीं रहना है, जो आस्तिक हैं, जो स्पिरिचुअल पर्सन है उनके साथ रहना है, इंद्रियों का अति योग, विद्या और हीन योग से बचना है, गुरु ब्राह्मण पूज्य व्यक्ति की निंदा नहीं करनी है, राग द्वेष चिंता भय से दूर रहना है। करना क्या है, तो उस टाइम से उन्होंने बताया कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनकी सेवा करनी है, जैसे देवता है, गौ है, ब्राह्मण है, अतिथियों का सम्मान करना है, कुल और वय में श्रेष्ठ जो है उनका सम्मान करना है, चरण स्पर्श करना है, भयभीत लोगों से जो आश्वासन है, दुर्गति से रक्षा करनी है। और जो हमारी किताबें हैं अध्यात्म पुराण, उनका अध्ययन निरंतर करते रहना है। इसी में आचार्य चरक ने इंद्रिय करणी अध्याय में आचार रसायन का वर्णन किया है। रसायन मतलब जो श्रेष्ठ धातुओं को बनाती है, ओज को परफेक्ट रखती है, आपकी इम्यूनिटी श्रेष्ठ रखती है। और ऐसे आचार, ऐसे आपके व्यवहार जिनसे आपको ऐसे गुण प्राप्त हो सकते हैं, वो सभी आचार रसायनों में वर्णन है। इसका एक श्लोक है, इसमें मिसिंग है, उसमें सब कुछ बहुत ही क्लियर है कि सत्यवादी नाम अक्रोधम, सत्य बोलना है। सर श्लोक ही बहुत अच्छा है और बहुत सिंपल है, इस स्लाइड में पता नहीं कैसे मिस हो गया। सत्यवादी नाम अक्रोधम, सत्य बोलना है, हमेशा क्रोध नहीं करना है, मद मैथुन से दूर रहना है, हिंसा नहीं करना, श्रम से अधिक परिश्रम नहीं करना। मतलब व्यायाम तक तो श्रम करना है, पर अन्यथा बहुत ज्यादा जो आजकल लोग जिम जा रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, वो सदव्रत में नहीं आता है। श्रम से अधिक कभी परिश्रम नहीं करना, हमेशा जो भी बोलिए सोच समझ के प्रिय बोलिए, प्रियवादी होना चाहिए। किसी की चुगली करके ऐसा कुछ भी करके आपके गुण नहीं बढ़ सकते, रज और तम ही बढ़ेगा, जिससे कि उन्नति नहीं होगी। जप और पवित्रता करना है, धैर्य रखना है, जिंदगी में हर चीज में धैर्य होना चाहिए, दान और तपस्वी होना चाहिए। इसके अलावा गौ है, ब्राह्मण है, आचार्य की पूजा करनी है, हिंसा किसी भी तरीके से नहीं करनी, काय हो, मन हो या वाचन हो, दया, और समय पे सोना है, समय पे उठना है, ताकि सर्केडियन रिदम मेंटेन रहे और बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। दूध और घृत सबसे अच्छा रसायन बताया गया है, इनका रोज सेवन करना है, क्योंकि एक हिसाब से आपके बॉडी में जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस होते हैं उनको मेंटेन करता है दूध और घृत। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है, धर्म शास्त्र आदि का आचरण करना है। अगर ऐसे आचार इंसान करता है तो उसे रसायन के समान गुण प्राप्त होते हैं। जो वो कहते हैं, ये शायद किसी यूरोपियन कंट्री से आया गुड डीड डे। वो सिर्फ एक दिन कहते हैं कि आप लोगों का भला करो, दूसरों को खुशी दो, पर एक बहुत बड़े टर्म में देखा जाए तो गुड डीड इज जस्ट फॉर अस, कि हम अच्छा करेंगे, हमारे सत्व गुण बढ़ेंगे, हमारी स्वयं की उन्नति होगी। दूसरों के गुड डीड्स या दूसरों को फॉलो करने से अच्छा है कि हम अपना सत्वित, अपना आचार रसायन समझे और उसे पॉपुलराइज करें। इस प्लेटफॉर्म पे इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सर।
थैंक यू वंदना जी। मैं जानता हूँ आपकी तबीयत खराब है, फिर भी आपने हाँ की। आई रियली हेड्स ऑफ। विजय, सुखी भव और जल्दी ठीक थैंक यू हो। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सुपर्णा सान्याल मुखर्जी जी, डॉक्टर सुपर्णा सान्याल मुखर्जी जी फ्रॉम बोलपुर। डॉक्टर सुपर्णा सान्याल मुखर्जी मैडम, वेलकम वेलकम। शुभ Yes, नववर्ष। namaste. शुभ नववर्ष जी। शुभ नववर्ष सभी को। शुभ नववर्ष की, बंगाली शुभ नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब आपको लोग बहुत खुश रहिएगा। थैंक यू, थैंक यू। Thank you very much for giving me the opportunity to say something for the good deeds. Basically, good deed is a conception. Conception in that case. So good deed we can do everywhere in every aspects of life. It's a very good that good deeds are good. Because good deeds are best good deeds are to forgive and forget. So if we can do something for someone, it is also a good deed. This deed is not mentioning anywhere. The dictionary meaning is different, but the deed is different. But when we are giving something different for the people, because every day, every aspects of life is in monotonous life formation. In the good deed formation, we can change, we can allow the change in the life of the particular individual. Good deeds is for the social being, good deeds for the social kindness, good deed for the social paying attention to the students, to the children, to the older, to the suffering, those who are suffering from. Your connection is interrupted, madam. Yes. Yes, sir. Yes, yes. The good deed is a very good deed is a very good aspects and very important aspects in our life. If we have to maintain in our interpersonal life, so every aspect is depending upon on the good deed. So good deed is a phenomenon in the 21st century to protect ourselves in a communal harmony. So good deed is the best deed. So it is the best performance of life. It is the best aspects of life. In Gita, there is a saying that if you can do for the others, it will return back to you in any day. So this deed is not is not always depending upon what I am doing and how much. In my Agnihotri. the previous life, और आगे if I can do something. Hello, am I बोलिए audible? हाँ कंटिन्यू करिए। आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही थी। आप ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो भी गुड डीड हम चाहते हैं इन माय पर्सनल और लाइफ फॉर द अदर्स, इट इज द गुड फॉर एजुकेशन, गुड फॉर social being, good for well aspects. Everything is depending upon on this good deed. So good deed is a phenomena, good deed is an aspect, good deed is a कुछ कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है। It's very surprising that हाँ, going on. However, I just want to complete it very few minutes. So good. If I can do something for the betterment of someone, and I hope that and the expectation that I will return back from the that sensation. So the return back that particular person come
on that way. But this good deeds can return back me from anyone. So good deed is a reciprocal system. Good deed is a very good the person, those who are living in the society at large. So people, good deed is always for the वास्तव में नेट की कोई बड़ी प्रॉब्लम है, अदरवाइज मैडम तो बोलना शुरू करती हैं तो मैस्मराइजिंग. यस, वेलकम मैडम. यू आर म्यूट. कुछ yes, बार लोग there is I don't know why this is happening today. However, I am just completing. So, good deed is a good phenomenon for the betterment of life, for the betterment of the society, for the persons, those who are living in the society, to do something. It is a good aspects that we can perform in our life. We can help to the people. We can pursue the goodness, good education, good social being, good moral education, good society being for the betterment of the for the people at large, because those who are living in the society, we are. आज लगता है सैकत जी वो नेट की कनेक्टिविटी में नहीं है. नहीं, नहीं कहीं नहीं कुछ है, कोई नेट का प्रॉब्लम हो रहा है उनके. हाँ मैंने आज ग्रुप में मैसेज डाल दिया है कि हाँ 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 हाँ, पोस्ट नहीं डाल. absolutely correct, absolutely correct. Because otherwise, these individuals are making the group admins responsible for any Yes. responsible posting. The government of India comes after the admins, not the individual making the post. And if you are in a foreign country, if I am in Canada, I cannot make a infuriating remark about the Supreme Court of that country. It is against the constitution. It is against the law. You are sitting in USA or UK and you are making derogatory comments about the Indian Supreme Court here, and on a common platform. I mean, it's thoroughly unacceptable. I think if he continues, you have to block this individual. I hope you are also admin. No, I am not admin there. You see, sir, I am not admin. I will make you अग्निहोत्री सर. आपसे भी रिक्वेस्ट है, कोई ऐसा अनर्गल मैसेज आए तो प्लीज डिलीट एंड वार्न डिलीट कर दीजिएगा. एकदम ब्लॉक कर दीजिएगा. क्रिएटिंग प्रॉब्लम. नवीन गुप्ता जी और बाबूलाल बराला, ये दो आदमी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उस ग्रुप में. देखिएगा, यदि कोई करता है आप म्यूट हैं, यदि कोई करता है एकदम म्यूट एंड ब्लॉक. Ekdom. Because the danger is, if there is any problem and the government of India takes action, then the action is directed towards the admins, not the individuals making the post. So Yes. it is the responsibility of the admins to make sure that no derogatory religious comments are made, no irrelevant fake news are circulated. So I was very, very alarmed from the morning as I could see that he was spreading fake news. बस होता क्या है कि ये लोग ना कुछ कुछ लिखते रहते हैं, अगर डिलीट कर दिया तो और लड़ने को तैयार हो जाते हैं कि आपने किस काउंट में डिलीट कर दिया. नहीं, the only thing is to block, completely block. हमारे कॉलेज ग्रुप में completely block the individual, completely block the individual. जिसको प्रॉब्लम है, ये किसी का बाप का जमींदारी नहीं है. आपको अगर कमेंट करना है, अपना ओन ग्रुप फॉर्म करो और इंग्लैंड में करके दिखाओ. Hello. I realized and apologize for posting a news which I received from WhatsApp group from India and reposting it on RER. Sincerely, I remain Naveen. He apologized. ठीक है. Second Vasu. Vijay Baba. Thank you. Vijay. Please continue. Thank you. Yeah. No, we are just waiting for madam. Like, if maybe I will start, and if madam gets the connection, then we will get her back on the track or something like that, or whatever you suggest. Madam is with us. She's here. Or we can wait for some time for madam to get back. No, she was going to complete almost 1 or 2 minutes. Yeah. Oh yes, madam is back. Yeah, Okay. Thank you. She's here. So just to the completion, so good deed is a good phenomenon and good life gesture for the betterment of the society, and good deed is for the nation building, and good deed is for the betterment of life sustainability. So thank you very much for giving me such an opportunity to say something. Thank you. Thank you very much, madam.
Thank you. Sakat ji, Dr. Sakat Kumar Basu. Thank you. Thank you. Thank you very much for honoring me to be on this platform one more time. I am extremely grateful to the two previous honorable lady speakers who very beautifully illustrated the concept of the good deeds and enriched us considerably. So thanks very much to them, and thank you to the Ayush platform for highlighting on a very important aspect on the Bengali New Year. So I'm very very respectful to you. On my part, I would like to say, good deeds and bad deeds. Whenever we have to talk about good deeds, we have to reflect a little bit about the bad deeds. As we are born in the society in India, from very early childhood, we are, impregnated with this idea about these good deeds and bad deeds, which is the doctrine of karma. Translated mostly in the Hinduism, propagated mostly by the Buddhism to the Western world, and also through Jainism and Sikhism. So everywhere there is this doctrine of karma, which talks about that in your life, it is every life, every human life, we believe is an opportunity. And in Hinduism and Buddhism, it says that your life and your birth as a human is an end of a process of chain where you have gone through numerous lives, as has been illustrated by the life of Lord Krishna or Lord Buddha, where they have said that they have gone through innumerable births as insect, as grasses, as plants, as butterflies, as lizard, maybe as tigers or whatnot. And then you have transformed into a human. So your human life is one of the supreme opportunity that the divinity has given to you. And then even if you are born as a human, our doctrine of karma says that your life is that you are continuously cycling you between life and birth, and you are coming back again and again to this planet to fulfill your duties. So every life that we have as a human, when we are born as a human, we have this opportunity to utilize this life to the best of the opportunity or to the best of its availability. How? By sharing, by reducing your bad deeds and by increasing your good deeds. Why we need to do good deeds? Good deeds are not only essential for your family, for your nation, for your region, for your family, your neighbors, or your country, or for a global impact, but it is also a very positive aspect of you as an individual. As we look across the mirror every day, when you do good deeds, you will figure out maybe you have not become richer, maybe you have not achieved like a mountainous task or a monumental achievement in your life, but through your action of small deeds, by just like helping someone to complete his education, helping a couple to get their daughters married, kanyadan or shikshadan, bhumidan, any kind of dan is considered in our religion to be a sacred duty. By helping others, you are actually helping yourself, because our teachings taught us this message that you get one step closer to your God. And what do we understand by this God? It is your inner exploration of your inner self. By looking into the mirror, you only see your image, a reflection of your mirror image. But with every good deed, your bad karma washes away, and you are given a better opportunity that in your next life, you land up with a good birth, again with good opportunities, again with opportunity to make good karmas. And through these good karmas, you complete the doctrine of karma, and one day you complete the cycle of life and you become an eternal soul. Our Gita says that your body, living every body, is like throwing away an old torn cloth. You never die. Your soul always exists in different bodies. You will be coming back to this earth time and again, time and again. So do the best. Do the best that you can do for the people. Do the best that you can do for the others. And by doing this, you are actually helping yourself. You are not helping simply the society or the world. You are helping yourself through your good deeds. You are creating better vibes just by sharing a welcoming smile. You win the heart of so many people. No one wants to see a grumpy face in the morning. If someone greets you at the door when you are entering your office or your workplace with a charming and a smile, you feel that the whole world has come to you and greeting you to start a new day. So every opportunity that we get in our life, we should try and do some great deeds, or good deeds, not great deeds. I mean good deeds in the way that it is beneficial for the others. And sometimes I do hear from our younger generation that our Gita teaches us that do everything selflessly.
and do not expect any results, then how should modern management teach us that you should always have expectation? How are we going to survive in this world if we have no expectation? I am not a leading religious leader or expert on this, but my humble answer to this is, say, for example, our modern management has taught us to be competitive, to be aggressive, to go on this rat race. But what were we achieving at the end of the day? Yes, high parts, a big car, a big salary, a big designation. But with this, we are also welcoming mental health deterioration, anxiety, depression, diabetes, high cholesterol, high blood pressure. So you have to also accept all these lifestyle diseases, incorporate into your life of great achievement. And whether if you would have lived 70, you are now having heart attacks at 40, 45, and 50. And 50 to 60 is one of the most vulnerable age for human beings around the world. So most of the health disasters occur at this stage. So how to get rid of this? So, we may have high ambitions, high aspirations, high expectations in life. We have to give up some of this and being more realistic, rather than having high ambitions for yourself and every time failing to reach those ambitions. Rather do something for the others selflessly, without any. Don't do it like a businessman, that I am doing this and then on return I am getting this. I have seen in southern India people go to Tirupati temple and they sign a contract with the god Balaji that this is the profit that I am making, and 50% goes to the temple, 50% goes to me, or things like that. I find this very childish. If you are settling deeds and goods and practices of economic transaction even with the god, and you are praying when you are in trouble but not praying when you are happy, then all your prayers are falling into deaf ears. I don't think that God is there when you are in danger. God is always with you, whether you are in good or in bad shape. It is your responsibility to remember him, the divinity, and to the best for the others. Help others, you will help yourself. So through good deeds, you can wash out your bad karmas from other life, move ahead and do positive things for this world. And by positive things, I do not mean that you have to win a Nobel Prize, or you have to become a Rajya Sabha or a Lok Sabha MP, or you have to achieve something so huge and great that others cannot touch. No, it's simply showing compassion for others, feeling for others, showing respect to the elders, doing something for your parents is, I think, a monumental deed that you will do. Do something for the society, but without that expectation. Whenever you have expectation, there is going to be depression. Whenever you have expectation from someone, you are going to land up in frustration. Whenever you have expectation from an organization, more and more you will see that you are not getting to the place where you are. Ambani is unhappy. You are unhappy. Everyone in this world is unhappy, in spite of the fact that you have so much money. So money is important for survival, but it is not the only sole tool for our survival. Purification of your inner soul and doing things for other will make yourself so joyous, so happy, and you will see one good deed will push you to make or facilitate the second good deed, and the joy you will get by doing that good deed, but for doing something good for the others, the joy that you get, $1 million is equivalent to that particular joy. So think about that. And in my humble way, I request all that to the best of your ability, try to do the good to all, and start this charity begins at home. Start from your home. Do this good to your close ones, and then extend it to your neighbors, to your relatives, and then to the greater world. You will definitely see a change around yourself. You will definitely find, if not anything, you are a happier, you are a more cheerful, you are a more successful person internally. Thank you so much once again for giving me this platform. I am honored. Thank you so much, Agnihotri. Thank you so much, Sharma ji. God bless you all. And happy Navavarsha to all. Happy Shiva Bengali Navavarsha. चलो, आपने एक टेंशन तो खत्म हुआ, 50 से 60 क्रॉस कर गए, वल्नरेबिलिटी हट गई. एक्सीलेंट. थैंक यू. हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन शर्मा जी, आप और अग्निहोत्री जी और सभी मिलके इस प्लेटफॉर्म को ऐसा धक्का दिया कि ये तो शिव जी की जैसा धक्का लग गया कि ये आगे ही बढ़ता जा रहा है, आगे ही बढ़ता जा रहा है, आगे ही बढ़ता जा रहा है, लाइक रामानुजन्स इन्फिनिटी.
द सक्सेस गोज टू इंफिनिटी। ये भी एक गुड डीड है शर्मा जी। लाइक ये इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन करना, हजारों लोगों को इस प्लेटफॉर्म में लाना, एक दूसरे को जोड़ना, ये भी बहुत पुण्य की काम है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। मेरा नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं सब सर्वदा आपके साथ है। थैंक यू। देखिए इस आया एक बात में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं। हाँ अभी हाँ सैकत जी बोले गुड डीड करोगे तो बैड डीड का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। मेरा मानना ये है, ऊपर वाला सबको बाउंस बैक करता है। बूमरैंग है, चाहे गुड डीड हो चाहे बैड डीड हो, ये बूमरैंग है। आप गुड ज्यादा करोगे तो गुड आपके पास ज्यादा आएगा, एकदम एकदम करोगे एकदम। तो बैड आएगा। लेकिन गुड से बैड का कंपैरिजन नहीं, वो कंपनसेशन नहीं होता। नहीं तो करोड़पति सब बुरी मौत 10-10 साल बिस्तर पे रह के एक्सपायर होते हैं। तो वो तो करोड़ों रुपया दान डीड, आप बोले ना तिरुपति में 50% की डीड करे आते हैं, लेकिन उनको उनके कर्मों का फल जरूर मिलता है। भले ही करोड़ रुपया हो, आईसीयू में ही 10 साल डले रहे, 10,000 रुपए रोज का बिल हो, लेकिन बस सुविधा भगवान देता है कि आप सड़क पे नहीं तड़पोगे, आप आईसीयू में तड़पोगे। फर्क इतना सा है। गुड डीड भी ज्यादा करें गुड डीड, और बैड डीड ना करें तो अच्छा। दिस इज माई हाँ हाँ, हम्बल। थैंक यू, बहुत अच्छा, डॉक्टर बहुत खूब। डॉक्टर सैकत जी, एक्चुअली जो IRES अगर कोई भी काम परफॉर्म कर पा रही है या कहीं पर भी किसी नंबर के साथ में पहचानी जा रही है, तो ये तभी संभव है जब आप जैसे लोगों ने इसको ऑर्नामेंट या किया है। या ये या ऑर्नामेंट, आपके ऑर्नामेंटेशन से ही, अभी मैडम बोली थी धन्याल जी कि आपको बंगाली नववर्ष शुभ हो, तो ये शुभ तभी है जब आप जुड़ती हैं, जब आप लोग जुड़ते हैं तभी ये शुभ होता है। और वो आपकी आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर हम उसका 1% भी कर पा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके मनोभावों का, हम लोगों का एक इनेक्टमेंट ही कहलाएगा। तो आप लोग जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। मैं अब डॉक्टर कमलेश महाजन जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर कमलेश जी से एक प्रार्थना भी करना चाहता हूँ सभी से। एक बार मेरा 1 तारीख को भेजा गया प्रोग्राम पढ़ लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। तो मैं पहले से ही मैं अलर्ट हो जाऊंगा। मतलब मैंने फोटो ऐड कर दिया है। लेकिन कमलेश, लास्ट मोमेंट में रिक्वेस्ट की, वो कह लगा फैमिली के साथ बाहर होंगे लेकिन जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत इज्जत मान जय हो जाते हैं। कमलेश जी, आपकी जय हो। स्वागत है, Thank you, स्वागत। sir. Namaste. Good evening to नमस्ते। all respected dignitaries here on this prestigious platform. आज का जो विषय है आचार रसायन। एक्चुअली आचार रसायन का अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो वेस्टर्न कल्चर और अभी वैदिक कल्चर, इसमें जो एक प्रॉपर लाइफस्टाइल हम मॉडिफिकेशन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आचार रसायन की जब हम बात करते हैं तब एट फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, सोशल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, जो हेल्थ डायमेंशंस बताए हैं उसमें भी वैयक्तिक सदरुत्त और सामाजिक सदरुत्त, ऐसे जो प्रकार, 2 प्रकार सदरुत्त के चर संहिता में वर्णन किए हैं। तो उसमें जो वैयक्तिक सदरुत्त है, अष्टांग योग का यम, यम के जो 5 तत्व बताए, अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम के जो 5 तत्व है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैयक्तिक सदरुत्त मीन्स इंडिविजुअल कोड एंड कंडक्ट, एंड जो अपना सामाजिक स्वस्थ वृत्त है और सामाजिक सदरुत्त है, उसमें सोशियल कोड एंड कंडक्ट, इसके बारे में हमने फोकस करना चाहिए। क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, जो यूथ है, जो जनरेशन हम देख रहे हैं कि एडिक्शन है। एडिक्शन के बाद देखिए जो अभी हाई लाइफस्टाइल प्रोफाइल की वजह से कुछ गलती हम नहीं बोल सकते, लेकिन एसेट्स जो आ जाते हैं उसमें मानस भाव जो बताए है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, सो ईगो फैक्टर कहा आ जाता है। न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से इनसिक्योर फीलिंग, फोबिया जो बात है, तो उससे भी कई बार क्या होता है कि जो इमोशनल जो अटैचमेंट चाहिए हर वक्त हर इंडिविजुअल का सोशल कनेक्टिविटी के साथ, वो नहीं रहता और वायलेंस को भी बढ़ावा मिल जाता है। अगर घर में बुजुर्ग आदमी है, अगर वो सजेशन देता है तो आज हम उसको डिनाई करते हैं और उसका डिसऑनर करते हैं। तो ये जो बातें हैं, बुजुर्ग जो कहते हैं, जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस होल्डर रहते हैं, उन्होंने सब अपने लाइफ में पूरा
चैलेंजिंग फेस करते हुए, हर सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज करते हुए नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाया रहता है। लेकिन संस्कार जो परादिगुण बताया है, परापरत्व युक्ति संख्या सहयोग एवच विभागस्थ पृथकत्व परिणाम तथापि, तो ये संस्कार है, तो संस्कार का आज कल्टीवेशन होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आचार रसायन में सिर्फ माइंड न्यूट्रिशन, बिकॉज धी ध्रुति स्मृति ये जो बताया है, जैसे हम बॉडी के लिए फिजिकल न्यूट्रिशन के लिए बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स की जरूरत है, तो माइंड न्यूट्रिशन, माइंड विटामिन्स ये आचार रसायन ही है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम जैसे सोचेंगे वैसी सोच हमारी एक्शन में आती है। अगर हम कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस से सोचते हैं, अगर पॉजिटिवली सोचते हैं, तो उसका डेफिनेटली और जो हमारे सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है, अगर नॉन वायलेंस है, तो नॉन वायलेंस का जो टच रहता है वो डेफिनेटली इंटरनल पूरी तरीके से जो षट चक्र बताया है, मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक, तो उसमें भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ी बताई है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना जो मेन है, तो जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है, डीप इनहेलेशन टेक्निक्स और मेडिटेशन टेक्निक्स है, आज जापान में देखो झेन मेडिटेशन टेक्निक्स है, बहुत ही प्रभावी है। साइक्लिक मेडिटेशन, तो ये जो है ये सब आचार रसायन के गोल्डन टूल है। सो वी हैव टू फोकस फर्स्ट अवर इनर सेंस, हमारे जो इनर सेंस है, हमारे जो अंदर की आत्मा है, आत्मा जो बताती है कि परमात्मा तो ईश्वर है, लेकिन आत्मा जो है कि ज्ञान अधिकरण आत्मा सा द्विधा परमात्मा जीवात्मा च तत्र परमात्मा एक एव, सो ये ईश्वर शक्ति है। तो उसके ऊपर श्रद्धा होना, डेली जैसे हमारे डेली लाइफ के लिए अन्न वस्त्र निवारा ये हमारी मूलभूत गरज है, जैसे अवर नीड, वैसे ही हमारा कोड एंड कंडक्ट आचार रसायन, हमारा पेशेंस, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी पॉजिटिव एनर्जी, हमारा सोशल टच, हमारा इमोशनल टच, और सबसे इंटर हार्ट कनेक्शंस टू अवर फैमिली ब्लड रिलेशंस, तो ये सब हमारे जो एक प्लेटफॉर्म रहता है कि कंस्ट्रक्टिव प्लेटफॉर्म हम जिसे बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस और डिस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस, डिस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस से सब आपके पास होते हुए भी आप कुछ नहीं लाइफ में साध्य कर सकते। जो 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, सो कंस्ट्रक्टिव प्लेटफॉर्म अगर आपके पास है, तो आपके पास पैसा भी कम होगा तो चलेगा, लेकिन अगर आपके पास मोरल वैल्यू है, नैतिक मूल्य, आप अगर उनका अच्छी तरीके से कल्टीवेशन करते हैं, आपका कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका चारित्र ही आपकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बताता है, आपके संस्कार ही आपका कर्म बताते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत होगा। आज रेव पार्टी हम देखते हैं, डाइन एंड वाइन कल्चर देख रहे हैं, पब डांस, ड्रग्स एडिक्शंस, डी एडिक्शंस के बहुत प्रकार है। आज वो स्टेटस सिंबल समझा जाता है कि आज होटल में अगर गए तो फैमिली के साथ आज जो मेल और फीमेल है वो ड्रिंक लेते हैं, बच्चे देखते हैं, तो ये बातें कितनी आज सही है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और दूसरी बात ऐसे कि वायलेंस, तो जो आज हॉलीवुड और बॉलीवुड में जो पिक्चर्स बताते दिखाते, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मूवी ऐसे कि उसमें से कुछ आउटपुट मिलता नहीं या लेसन नहीं मिलता है। पहले कैसे था, पहले जमाने में कि उसमें कुछ ना कुछ तो अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल रहते थे, उससे एक स्लोगन भी रहता था, सजेशन भी मिलता था। लेकिन आज के जो पिक्चर से उसमें देखा जाए तो ऑब्जेक्शनेबल है, फैमिली के साथ हम बैठ के नहीं देख सकते हैं, उसमें भी वायलेंस देखता है, देखे जाते हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा एक रोक आना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरा, आयुर्वेद इज आर्ट ऑफ लिविंग साइंस, इट इज नॉट अ मेडिकल साइंस, but it is art of living science. So each and every individual have responsibility to adopt this principle and try to implement in our society. Thank you very much. I am very thankful to respected Dr. Pavan sir, Dr. Agnihotri sir, and all the respected dignitaries from all over the world. They have gathered here, they have given their prestigious time and also given the suggestions.
And once again, I am very thankful and Shubharatri. Thank you very much. Thank you very much. Madam Sutpa Vardhan ji, would you like to say something? Sutpa Vardhan ji, then we'll conclude. Sutpa ji, are you comfortable? Madam Sutpa Vardhan ji, are we audible? I hope she is not comfortable. Agnihotri sir. Thank you, Professor Pawan Sharma ji. Really, we are all done with the ideas and thoughtful presentation of our guest speakers of today's this topic based on the novel deeds or the good deed day. Really, all speakers appreciated and underlined all the good activities which has to be performed by every individual and any individual, irrespective of the result of that one. If we feel that this is a good action, this is a good thing, this is a good thought to be executed, we should proceed without any delay and without any prejudice, or not to be competitive. That a person is making a donation of 10,000 rupees and I can donate only 10 rupees or 100 rupees, no problem. It depends on the every individual, that your 100 rupee donation will give you a great say satisfaction that you spared your 100 rupees, and that will be definitely useful to the person to whom you gave, instead of just giving lavishly for any birthday party or any this thing, just to suppose that I can afford this much of amount. So good deeds has got its a wonderful presentation, and all the today's presenters made all the things in a form of personal individual approach and the approach for the society. Everything is well written in our Vedas, in Manusmriti, in all the social science text. अपने जो नैतिक शिक्षा का विज्ञान की पुस्तक होती थी, उसमें सुभाषितानी में हर जगह यही बताया गया है कि हम मतलब परोपकारी बने, दूसरे के लिए हेल्पफुल हो और अपना भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने मन वाणी और कर्म से किसी को हानि न पहुंचाएं। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको रिपीटेडली कहा जाता है, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे ग्रेजुएशन हो। HR की नौकरी में हर जगह ये बताता है कि हाउ टू मेंटेन द डिसिप्लिन, हाउ टू मेंटेन द टाइम कीपिंग, हाउ टू प्रमोट अदर्स, हाउ टू सपोर्ट अदर्स, हाउ टू बी यूजफुल फॉर अदर्स। तो ये सारी चीजें लाइफ लॉन्ग सेटअप में आती हैं, इसमें एक दिन या एक क्लास पढ़ने से या एक डिग्री प्राप्त करने से नहीं होता है। और यही वजह शायद वेस्टर्नर्स थॉट अबाउट इट दैट इट शुड बी सेलिब्रेटेड एंड एज अ फॉर्म ऑफ रिमाइंडर दैट वी हैव टू follow the good deeds concept on daily basis. This is what the exact concept of the today's this webinar's topic, and we are all overwhelmed with the presenters' knowledge given to our platform. We are so thankful, and we thank them for the association, for their experience, for their knowledge they poured to our department, our this platform. Thank you so much, and especially thanks to Dr. Kamlesh Shivram Mahajanji, who readily prepared himself and consented hardly an hour or two before the presentation. Really, I'm very thankful, and we test upon them that such a committed persons are here as a supporters to our IRES. That's why the IRES is breathing and it is running and it is proceeding ahead and ahead on every new day. Thank you so much, and over to Professor Pawan Sharma. Yes, sir. You are mute. Thank you very much, sir. Thank you very much. अब गुरुदेव से आखिरी का उपसंहार आशीर्वाद लेके और कल की बता दूं केवल सूचना थोड़ी सी। 8 बजे से कल पहला वैशाख, 9 बजे से हिमाचल डे आधा घंटे के लिए, 9:30 बजे से एम प्रसाद जी। सर आप लोग यदि बता सकें, डॉक्टर एम प्रसाद जो केरला के थे वो किस में आए थे? नहीं मिल रहा है उनका फोटो डिटेल, लेकिन वो आए हैं अपने यहाँ बहुत दिन, केरला के हैं वो, अच्छे एक्सपर्ट हैं। और रामदास जी और साथ में क्या कहते हैं हमारे एक अर्जुन चांद जी, ये 3 बोलेंगे अपने क्या कहते हैं वो इसका बिहू नहीं, विशु बिहू छूट रहा है, बिहू की बताएं। बिहू भी तो आजकल भी होना चाहिए ना। हाँ, तो वो हमारे पवन वो विश्व शर्मा जी के कब्जे में है, वो खुद ही गायब है। वही तो व्यू बना रहे हैं, व्यू बना के आएंगे तब फिर तस्तरिया दिखाएंगे, इतनी डिशेज हमने खाई। वो मैं नहीं जानता सर। अच्छा, मैंने जो रखी थी